Life goes so fast, I've been living so slow. Let's just leave, do whatever we want to. I don't want no regret, no rainy days. Let's head out west, try to live for more hopes. Wake up with a beer on the Pacific coast. I don't want no regret, no rainy days. Just wanted to show you guys I study like this these days, and sometimes I even cover up my face like this because it's way too cold in this room. Struggle with Life this. goes so fast, I've been living so slow. Holding on my past, I just wanna let go. I don't want no regret, no rainy days. When we're out west, we'll only drink French roast, Harlem tomatoes on apple. Hi everyone, welcome back to my channel. Good morning. Okay guys, so welcome back to this channel, and it's been a long time because I was lazy and also I wasn't in the mood to record. So now I'm back, and right now the first thing in the morning that I'm going to do is reasoning. पहले I used to do maths in the morning, but अब अगर मैं सुबह सुबह मैथ्स उठा लूँगी तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है, दिन भर की पढ़ाई भी मेरी ख़राब हो जाती है. So that is why I am going to start with reasoning. You might be wondering कि कौन सी एग्ज़ाम की reasoning. So this year I have also filled SRCC GPO. I did not fill my CAT because I was not sure if I was prepared for that kind of syllabus, and honestly I knew कि नहीं हो पाएगा. ऑलरेडी पता है नहीं होना, मत कर यार, छोड़ दे. दैट इज़ वॉट माई एडवाइस इज़ गोइंग टू बी, बिकॉज इतनी बुरी तरीके से उड़ने के बाद इन कैट जैट एंड पता नहीं कौन से एग्ज़ाम जो मैंने सब भरे थे, पैसे बर्बाद. या सो इन कैट माई परसेंटाइल इज़ इन 80s, एंड जैट और स्नैप का तो छोड़ ही देते भाई. थ्रू कैट आई फिल्ड लाइक 2-3 कॉलेजेस, जो कि जिसमें से कि एक इरमा भी है, बट आई डोंट नो, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है. सो लेट्स सी क्या होता है. एंड ऑनेस्टली दोज कॉलेजेस आर नॉट लाइक माई फर्स्ट चॉइस, एंड आई स्टिल हैव 3 एग्जाम्स अहेड ऑफ मी. सो आई एम like trying to get into a better college through those exams. So that is my plan. मुझे लगता है मेरे साथ साथ बहुत लोगों की लंका इस बार लग गई है, क्योंकि जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो तोते उड़ा देने वाला था बिल्कुल ही. सो इट्स फाइन गाइज, कुछ तो हो ही जाएगा. ठीक है यार, ठीक है, लगे रहो यार, लगे रहो. हम कहीं पर जाएंगे, हम जाएंगे. कहाँ जाएंगे ये नहीं पता है, पर हम जाएंगे. ठीक है, इट्स फाइन. तो बकवास किए बिना लेट्स गेट बैक. भाई मैं इतने दिन से पढ़ रही हूँ यार, मेरे को लगता है कि अब क्या नया पढ़ूँ, और फिर भी कुछ आता नहीं. पता नहीं क्या पढ़ रही हूँ मैं इतने टाइम से, बट इट्स फाइन. सो या, लेट्स स्टार्ट विथ रीजनिंग. So I just had dinner, and I'm going to make a timetable so that I can have all my days planned. कैट के बाद से ही मेरा स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था. There was no fixed time for anything. मतलब सब हो रहा था बट रैंडमली इधर उधर हो रखा है. Honestly I want to get back to the old me, old routine जो कि मेरा कैट के पहले था. I was constantly studying every day, and I didn't even felt the need to take breaks. And that is why also, even though I got marks in the 80s, I am still proud of my marks. I mean, I'm still proud because I know कि मैंने वहाँ तक पहुँचने के लिए भी मेहनत करी है.
आई डोंट नो कि मैं उतना अचीव नहीं कर पाई जितना मुझे करना चाहिए था टू रीच टू अ गुड IIM और समथिंग लाइक दैट, बट आई एम स्टिल प्राउड. Honestly, I am. Yes. So what I'm going to do is through this video, I'm going to start again, reset my days and get back to it. And there were a few more things that I wanted to talk about, but I forgot. Let's do this, guys. And if you're also procrastinating, this is your sign to start right now. Get back to your routine. I know that I don't feel okay. I hate it cause it's every day. I'm making up my own mistakes. So I finally completed it and it's ready. इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं किया है फालतू का, बस डेट्स लिखी हुई हैं and there is the topic that I want to cover on that date. And इंग्लिश में भी I have to cover grammar. Even though मैंने एक बार पहले पढ़ी हुई है, पर पता नहीं मैं ग्रामर कितनी भी बार पढ़ लूँ, एट द एंड मैं अपने इंस्टिंक्ट पर ही काम करती हूँ. तो जो मेरे को सुनने में अच्छा लगता है वही मेरा आंसर होता है. ग्रामर के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि मुझे कवर करने हैं, एंड इसके अलावा रीजनिंग है, DI है, तो उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक लिखना नहीं था. So that is all I did and I really want to start over. Like वो कैट वाला जो enthusiasm था वो वापस से स्टार्ट करना है, बिकॉज अब 3 एग्ज़ाम बचे हैं. मेरा बेस्ट शॉट इस पे ही लगने वाला है. लेट्स सी बेस्ट शॉट के नाम पे मैं क्या करती हूँ, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट यार, एंड आई नो यू आर टू. इट्स टाइम टू नॉट लूज होप. जस्ट होल्ड ऑन टू दैट वन होप, वन एग्ज़ाम जो कि तुम्हें लग रहा है तुमसे क्लियर हो जाएगा. उसके लिए ट्राई as hard as you can and I'm sure you are gonna make it, because what else can we do. इस बारे में गलत सोच करके वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा. Just work towards your goal. That's all you can do. Life goes on and on and on.